alaikum everyone and welcome to Future Serve Overseas Education Services. My name is Farda Mazhar. And I am Amr Owais. Sir is currently serving as an ESL and IELTS instructor at Future Serves, and we warmly welcome you all once again. So guys, once again, the topic for the discussion today is about IELTS. Today we are going to talk about IELTS. Let me repeat it again. The session is all for you. You can ask questions if you want. We are live. We are with you. Sir Amr is here to support you, to guide you, to help you through each and every question that is required by you. So guys, before getting started, let me share a little bit about FutureServe. FutureServe is basically an international education advisory, and we are offering you three kinds of services. That is the career counseling, that is the international exposure, and the skills development. In the career counseling, we help you find the best suitable discipline for you, which will be helpful for you to pursue your higher education from abroad. We also give you the insights of the universities that you'll be interested to take admission in. That could be the fee structure, the eligibility criteria, and which English language proficiency test is good for you. We also help you through your application processes, your documentation, and your visa procedures, etc. In the international exposure, we give you the pre and the post departure trips, the traditional and the cultural trips, the lifestyle and the living standard of the place you are going to live a little longer. In the skills development, the most important part, we guide you through different professions through which you can mingle with the job market of the place you're going to live. So this is it, a little bit about FutureServe. So getting started with IELTS, the most important English language proficiency test that is accepted worldwide. Mr. Amr Owais, the IELTS expert, the IELTS instructor, is going to talk about the importance of IELTS to us. Over to you, sir. All right. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, who is the King of the kings and the King of the day of resurrection, let us start the class with the gracious and supreme name of Almighty Allah. Today we are discussing about the IELTS. We have made a lot of videos regarding IELTS, and I think I have briefly explained the points and the rules and regulations and the terminologies of IELTS, what a student should apply in the IELTS examination. Exactly. To throw light on the IELTS academic modules, I would certainly speak about the listening, reading, speaking, and writing. That these are the four modules which are basically used in the IELTS academic section. Like it is designed for the students who want to take admission in abroad in education purposes. So the students who want to go to abroad for education purposes, they really have to go through academic IELTS. They will have to go through the rules and regulations, the points, the terminologies, as well as the eligibility criteria of the test takers or the candidates who are appearing for the IELTS, who want to take admission, who want to appear for IELTS and take bands. For sure, I would say that the students should be struggling, and they must be making an aim to take more than 6 bands, like from 6.5 to 8.5 bands. Like this should be the range, the target range of the students. So like how to take 7 bands in IELTS? It is like very common question from majority of the students who come to my class and ask the question. They say, sir, how can I get 7 bands, or how can I get 7.5 bands? So I say that the more you are indebted, the more you are devoted towards your English communication, the more you will get these the bands, and the more you will secure the results and the scores out of it. So what if I'd say that IELTS is testing system, international English language testing system. It means that the IELTS tests your all 4 modules. Your listening, like the way you listen, like the way you utilize, like the way you give the answer according to the question. This is the listening. You move towards the reading, you read the article, you read the subtitle, you read the passage, you know the synonyms are of it, you have good range of vocabulary in your brain, and you can easily understand and rectify the meanings of the sentences which are written in the reading sector. You've got 3 passages, you've got around 40 minutes you've got 1 hour to perform the duties of giving answers of 40 questions. You have
a lot of time. So if you have good command over your English communication, you have good command over your vocabulary, so you will be able to give the answers of the 40 questions in 1 hour, which really is a very easy thing. I've got a lot of students, alhamdulillah, they've got more than 7 bands, and they were so happy because I Yeah. told them how to get the bands out of it. Yes. The point is, you have to stay consistent, sharp, and devoted. Hmm. There is nothing difficult in it. There is nothing impossible in it. The point Exactly. is, you have to struggle and work hard a little bit if you really want to get good grades in your IELTS examination. So, for instance, I would say that the writing topic, right? Okay. So the writing topic is something like you will have to write down the essay, and you will have to present the statement out of it. You'll be given with a piece of paper. You will have pictures out of it. You will look at the pictures, and then you will present the opinions according to the pictures, according to the image what you see in that True picture. that. So it is a writing task one. You will have around 20 minutes, and you will have to write down around 150 words. Cool. So that is something like the statement, I would say it can be cue card, pie chart, line, graph, diagraph, image, whatever. Yeah. Okay, so you will have to look at this stuff, and you have to give the answers. And then Okay. in writing task 2, you will have to write down 250 words in the Exactly. duration of DSC. 40 minutes. So it is writing task 2. Yep. Same is the case with the speaking. You'll be given with a pie chart. You have to look at it. You have to think on it for 1 minute. You have to prepare a short and easy presentation of 3 minutes to 5 minutes. You will present the presentation, and then speaking task 3. They will ask questions according to this proven sector what you do. So it is all about the IELTS examinations. But now, where the question arises, here the question arises that most of the students, they feel scared of getting IELTS examination. Exactly. So, how to overcome the fear, how to overcome the challenges, and how to overcome that sense of fearing. So, I would give a very simple and easy example to the students that before taking the IELTS examination, you really have to improve your English communication and your vocabulary. Now, if your English communication is good, you will speak in English with the people. You will have good command of communication over the students. You will tell them how to teach, and you will tell them how to appear in the IELTS examinations. But until and unless a student does not have a good communication skill, he will definitely have problems in his speaking, reading, listening, and writing. Like all of these 4 modules are interrelated, they are interconnected. That the fusion of these 4 modules are interrelated with each other. So I would not say anything against this terminology, but to throw light on the question you asked, I would certainly say that yes, that is the point which really need to be neglected, that the students should never become disappointed. Yeah. Now, that is the point. Students become disappointed. They say that I cannot do it and I cannot do it. Yeah. And They lack patience. the people force them to take the IELTS Yeah. examinations again and again, but they do not take active part in taking the IELTS examination again because they become disheartened. Now, let me tell you something. It does not have any limits. You can take it as many times as you can until and unless you're not satisfied with the communication, until and unless you're not satisfied with the results, right? So it would cost you around 36,000 in Peshawar, you're given the test, right? And if you move to Islamabad, it costs you around 41,000, which is nothing. So, like, if I say 41,000 rupees a student can pay, so he can understand the importance of the test. So, why not to practice and work hard on a little bit? I mean, if you're trying to take admission in UK, and if you really want to take admission in Australia or anywhere, so you have to work hard on it. Like if you're appearing in the January intake, so wait for some time and appear for the April intake. Yeah. Or if you're appearing for the April intake, wait for some time, improve your English, and appear in the September intake. So it will be so good for these students if they give the IELTS examination. So I would request my students that do not become disheartened. Do not become disheartened. IELTS is an easy test, right? Exactly. But it has some rules and regulations. Until and unless you do not look at the rules and regulations, until and unless you do not understand the rules and regulations, you will definitely have issues and problems in giving the IELTS examination. So, for instance, I would say that the vocabulary must be improved. Like you should memorize around 10 vocabularies each, and then use them, utilize them in your daily communication. If you look my previous videos, I've told you how to memorize the vocabularies and how to present in your communication. And I've already explained about the tenses, and I've already told that how to use the vocabularies in the tenses. So I think I should not be repeating the sentences again. I think I've already completed these sections more than 2 to 3 times. You can better watch my previous videos on my YouTube channel as well as on the Facebook page of Futures of Overseas Education Services. So this is all about my sentences, and this is like what I wanted to speak about the IELTS, and I hope that I've presented all the modules very well, and if there's anything you can ask. I think that it's a matter of 2 to 3 months, and you're all set and ready to go for the IELTS examination, right? We have talked about the presentation that you were saying कि किस किस एक मॉड्यूल में रीडिंग में ना
थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपने 2-3 मिनट की बनानी होती है, एंड देन यू हैव इट टू इज़ इन प्रेजेंट. स्पीकिंग. हाँ या इन स्पीकिंग. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इट इज, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स नहीं, को? वो आपको पाई चार्ट दे देते हैं ना, दे गिव यू अच्छा. पेपर, आपने उस पेपर को देखना है और उस पेपर के बारे में आपने कुछ बनाना है. अच्छा. हाँ, आपको 1 मिनट दिया जाता है, हम्म. कि आप उसको देखें और उस पर कुछ प्रेजेंटेशन बनाएं और वो आप आगे स्पीक करें. इट कुड बी पाई चार्ट, इट कुड बी क्यू कार्ड, इट कुड बी एनीथिंग. अच्छा, जी. आई थॉट कि कोई किसी वो दूसरी टाइप की प्रेजेंटेशन है, तो फिर नहीं उसके नहीं ऊपर नहीं हम नहीं थोड़ी नहीं, सी वो बात उस तरह करें. डाइस पे खड़े अच्छा होने अच्छा वाली अच्छा. नहीं है कुछ भी. नहीं लाइक यू आर नहीं. सिटिंग ऑन योर चेयर एंड यू आर स्पीकिंग या डायरेक्टली इंटरेक्टिंग बट विद दी. जो भी हो, चाहे आप डाइस पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या चेयर पे बैठ के दे रहे हैं, देयर मस्ट बी सम टिप्स, देयर मस्ट बी सम थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर देखें, माइंड, लाइक यू हैव टू बी प्रेजेंटेशन प्रिसाइज. प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहला रूल जो है, आपको 1 मिनट दिया जाता है ना, तो आपने हम्म. ये 1 मिनट का टाइम बहुत छोटा है, या बहुत कम है. या इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको कम से कम अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट आप अपनी करें, ताकि वो 1 मिनट जो है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ बना लो. यही अब बात कुछ है. स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीकिंग का मसला होता है बहुत ज़्यादा, वो आइल्स के लिए बैठ जाते हैं जाकर, तो वो 1 मिनट के अंदर वो प्रेजेंटेशन नहीं नहीं बना बना सकते, सकते जिसकी ना, वजह यही से बात है. उनके बिल्कुल. स्पीकिंग के ग्रेड्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. बिल्कुल. तो ये प्रेजेंटेशन अगर आप फॉर एग्जांपल एक आपको एक पाई चार्ट दे दिया जाता है जिसके ऊपर जो है एक पिक्चर बनी होती है, जिसके अंदर एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन बता रहे हैं, उसकी सप्लाई चेन बता रहा है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन एरिया बता रहा है, उसका वेयर हाउस बता रहा है, उसकी स्टॉक उसका बता रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रक्स बता रहे हैं, और ट्रक्स के बाद ट्रक के अंदर सामान लोड हो रहा है और सामान जा रहा है मार्केट में सेल आउट होने के लिए. ओके. तो ये एक छोटी सी इमेज मैंने बता दी आप लोगों को. तो आपने सबसे पहले क्या कहना है, दैट आई वुड नाउ स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन एज गिवन इन द पाई चार्ट, आई कैन सी दैट. As given in the chart, I can observe that. या As given in the chart, I can rectify that. या That there is a big factory, there is a big factory of something, and they are producing something. It looks like a very big factory. There are a lot of employees working in there, and there is a very big place where the production area is held. The people are performing their duties very well. I can later see that the produced stuff is then taken to the warehouse and they are kept in a very beautiful way, and the people are just containing it, and that is kept there in a very well manner. I can see that the people are observing and they're keeping it with so lightly, and they are not या going to destroy it, and that is not that is considered as a very good term of that factory. I can also see that the employees in that factory are wearing the same uniform, which shows the uniform chart. यूनिफॉर्म. That is also very good. The uniform chain is there, uniform tie is there. I can also see it is very good and very interesting. I can also see that there are a lot of trucks which are parked in front of the warehouse, and I can see that the laborers are carrying the stuff and they are loading the truck with the cottons the factory has produced. As well as I can see that the trucks are being driven to the market, and the cottons and the things and the productions are supplied in the market, and then they are sold in the market. So I believe that this picture shows that the entire criteria of the factory, as well as the people who are performing the duties in it, and I can see that this factory is exporting the stuff as well, because there are a lot of trucks and they may be taking the stuff to the borders and they may be exporting it to the another country. तो एग्जैक्टली. ये इस तरह का आपने जो है ना, एक 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 ख्याली आपने कुछ बनाना है अपने ठीक है. सामने. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है आप वही एक्सप्लेन करें. एग्जैक्टली. आप उसको देखकर अपनी तरफ से भी कुछ बता सकते कुछ हैं. बता ठीक है, सकते लाइक जिस हैं. तरह की स्पीकिंग मैंने की, आपने इसी तरह की स्पीकिंग करनी है, लाइक नेचुरली स्पीकिंग करनी है. नेचुरल. एग्जैक्टली. ठीक है, आपने थोड़ा सा रुकना है बीच में, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी बात करनी है. इस तरह नहीं कि आप एकदम से पानी की तरह. हाँ तो जी, वो इस तरह नहीं, मतलब जिस एग्जैक्टली. तरह मैंने बात की व्यायाम कर, मैं रुक भी रहा था, मैं सोच भी रहा था, मैं बात कर रहा था. हालांकि मेरे सामने कोई पाई चार्ट वगैरह कुछ भी कुछ नहीं भी है, नहीं है. लेकिन बिल्कुल. फिर भी जो है मैंने उसको बेहतर तरीके से या डिफ़ाइन किया. तो इसी तरह जो है स्टूडेंट्स उनको इस तरह डिफ़ाइन करने की अगर वो चाहते हैं कि गुड बैंड्स लें, तो उनको नेचुरल स्पीकिंग जिस तरह मैंने की उस तरह उनको नेचुरल स्पीकिंग करनी होगी, जो कि आपका प्रेजेंटेशन है. बस बात करने का मकसद ये है कि काम करना है, स्पीकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, देखनी है, ताकि उसके थ्रू आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो सकें. वो आपका मिरर प्रैक्टिस भी हो सकती है, आप अपने साथ बात करें, आप अकेले में बैठे हैं, आप अपनी डेली रूटीन को, अपने पूरे दिन को अपने साथ डिस्कस करें. यू कैन इवन लाइक टॉक टू योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, एनी वन, योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, anybody. All what it need is your practice, your commitment, and your determination, your devotion, that you really want to speak in English in a fluent way, because that is the point where you can get good scores, good bands in IELTS. So
Anything else? जी, इसमें एक चीज़ मैं और स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करूँगा Okay. कि जब आप अपनी स्पीकिंग करते हैं, तो स्पीकिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टे शार्प, Yeah. यू हैव टू स्टे डिवोटेड। आपने टॉपिक के बीच में ही रहना है, आपने टॉपिक से आगे पीछे हटना नहीं नहीं जाना। है, बिल्कुल। अगर आप फॉर एग्जांपल टॉपिक से आगे पीछे हट जाते हो, इफ़ यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ द Yep. स्पीकिंग सेक्शन यू डूइंग, तो उसका कोई भी आपको फ्रूटफुल आंसर नहीं मिलेगा। Exactly. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप प्रोडक्शन के बारे में बताओ, तो आपने प्रोडक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, आपने उसकी एक्सपोर्टिंग के बारे में नहीं बताना। बिल्कुल। अगर उसके अंदर एक्सपोर्ट मेंशन है, जिस तो तरह फिर मैंने बात आपको कहा करें, कि जी हाँ। ट्रक्स मैंने देखे, ट्रक्स के अंदर माल लोड हो रहा है, तो वो लोड एक्सपोर्ट ही हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है मैंने उसको मेंशन किया। तो इसी तरह आपने अगर एक टॉपिक अगर आपके पास रुक गया, अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर बात करना स्टार्ट कर ली, तो आपने उस टॉपिक के बीच में ही रहना है, जी आपने हाँ। उस टॉपिक से हटना नहीं है। अगर आप एक मरतबा उस टॉपिक से हट गए, तो इट मीन्स दैट आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है वो उस लेवल की नहीं है, नहीं है, तो आपने आइल्स में डेफिनेटली आप मसले मसाइल का शिकार हो जाएंगे। that's really दैट true. इज द केस दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन गेटिंग गुड बैंड्स Good इन देयर bands. आइल्स एग्जामिनेशन। Exactly. तो ये इस बात में हमेशा स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना वो मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इंसान है, स्टूडेंट लाइफ है, हम भी इसी तरह थे, बिल्कुल ऐसे ही मस्तियाँ करते थे, हमें भी हाँ, किसी बिल्कुल। चीज़ को ज़्यादातर हम सीरियसली सीरियसली लेते लेते। थे, बिल्कुल ऐसे ही। कोई मसला नहीं, लेकिन सिखाना मेरा फ़र्ज़ है। जी हाँ, पिछले 9 सालों से शोबे के साथ मैं वाबस्ता हूँ। ठीक है, दरस व तदरीस के साथ मेरा वास्ता पड़ा है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत अच्छा बेहतर है, मिल अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है। या बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो होता वही है। होता वही है। दूसरी बात ये कि आप अपनी हर प्रॉब्लम को या अपनी हर डिफ़िकल्टी को आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको मैच करना शुरू कर दें, उसको कंपेयर करना शुरू कर दें, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम आइल्स की बात करते करते किसी और चीज़ की तरफ चल जाएं, तो यू गेट बोरेड कि भाई टॉपिक कुछ और था, बात ये लोग कुछ और कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ टू स्टे कॉम्पैक्ट, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, कॉन्क्रीट, क्लियर। जितना क्लियर रहेंगे, जितना आप सीक्वेंस्ड रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बात में वजन भी होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे बैंड्स भी आप लोग जो हैं वो इसमें गेन कर गेन सकते कर हैं। सकते हैं। या सो व्हाट एल्स? ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर हमसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली। मिस्टर आदिल कह रहे हैं कि सर टेल मी द रूल्स हाउ टू मेमोराइज द वोकेबलरीज। आदिल, आई हैव टोल्ड यू about the rules and regulations of memorizing the vocabularies. If you really want to know about improving your vocabulary, you should watch my previous videos, यस, जिसमें मैंने अपनी जो है मैंने बताया आपको कि किस तरह आप अपने वोकेबलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। सबा कमर कह रही है, सर आई वांट टू टेक आइल्स एग्जामिनेशन बट आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट जनरल एंड एकेडमिक। बच्चे, जनरल जो है ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए नहीं होता। जनरल जो है आप इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए या स्पाउस वीज़े के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल होता है। अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एकेडमिक टेस्ट देना होगा, जिसमें आपकी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग चारों की चारों होंगी। मुझे पता नहीं है आप कहाँ से हैं। अगर आप पेशावर से हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं, मेरे ऑफिस आ सकती हैं। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कोई इशू नहीं, मैं आपको आइल्स की तमाम जो है वो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा आपको, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्यूचर सर्व ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज में आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट फ्राइडेज पर अरेंज किया जाता है। थ्रू दिस यू कैन एक्चुअली चेक योर एबिलिटीज़ के आप आइल्स को कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको क्या कहते हैं सर उसकी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इश्यूज। हैं जिनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोग आपके साथ डेमो क्लासेस भी जो है वो करते हैं। सर आपको डेमोज देते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपको टाइम देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, आपको सजेशंस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। सो द पॉइंट इज दैट फ्यूचर सिव्स इज वार्मली वेलकम यू ऑल टू कम एंड गेट योर आइल्स क्लासेस विद मिस्टर अमर ओवैस, एंड आई गारंटी यू कि इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे भी, और यू कैन, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग एंड ऑल ऑफ यू हैव द पोटेंशियल टू डू आइल्स at the best of your levels, and we are here to help you. Definitely we are. So जी, मिस्टर दाऊद खान कह रहे हैं सर लिसनिंग के बारे में ज़रा समझा दें। मिस्टर दाऊद, लिसनिंग जो है, लिसनिंग आपको दिया जाता है एक पीस ऑफ पेपर, और आपको हेडफोन्स आप लगाते हैं, ठीक है, और उसमें जो है 1 घंटे का आपकी लिसनिंग सेक्शन होती है, जिसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं।
द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। इन चारों स्टेज के अंदर आपने ऑडियो को सुनना होता है और उस ऑडियो के बीच में आपको जो पीस ऑफ पेपर दिए जाते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो आपने ऑडियो सुन के उन ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ठीक है, तो ये 1 घंटे का टेस्ट है और इस 1 घंटे के अंदर आपने 40 ब्लैंक्स जो है ना वो फिल करने हैं। तो 1 घंटा जो है आपने कॉन्स्टेंटली पेपर की तरफ देखना है। फिर जब आप उस पेपर के ऊपर अपना आंसर हल कर देते हो, फिर उसके बाद आपको एक आंसर शीट दिया जाता है, जो आंसर आप उस पेज से उठाकर आंसर शीट पर कॉपी कर देते हो। तो ये आपका लिसनिंग सेक्शन है जो कि सिर्फ 1 घंटे का होता है। एग्जैक्टली ठीक तो है, अभी देखें कि सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, द वे यू हैव टू परफॉर्म द होल थिंग, कितने मजे की चीज़ है कि आप सुन रहे हैं और साथ साथ आप लोग फिल कर रहे हैं, तो जी एक वो डेवलप हो जाता है इंटरेस्ट। एंड हम लोगों के पास यहाँ पे फ्यूचर सर्व्स में सर अमर ने प्रॉपर इस तरह से अरेंजमेंट आपके लिए किया हुआ है कि वो इसी तरह से एग्जैक्टली ऐसे ही आपको डेमोज भी देते हैं और मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही वो प्रैक्टिस कराते हैं। सो आई डेफिनेटली विल रेकमेंड ऑल ऑफ यू द पीपल इन पेशावर कि वो आएँ, स्टूडेंट्स आएँ और सर के साथ ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर करें, so that you'll come to know the real of IELTS। सिर्फ जुबानी कलामी बात से कुछ नहीं होता है। हम लोग तो जितने चाहें हम तो सेशंस करते ही रहेंगे, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे ही आप है। लोगों पे डिपेंड करता है, सिखाना सर का काम है, बोलना मेरा काम है, लेकिन काम सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिशान खान फिर पूछ रहे हैं, टेल मी अबाउट रीडिंग। ओके, तो मिस्टर जिशान, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड द अ लॉट, रीडिंग ब्रीफली। या जस्ट टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट आपकी रीडिंग जो है उसमें आपको 1 घंटा दिया जाता है, आपको 3 पैसेज दिए जाते हैं और उन 3 पैसेज के अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स आपने देने होते हैं। जी हाँ, इसके अंदर हेडिंग आ सकती है, इसके अंदर मैच द कॉलम्स आ सकता है, इसके अंदर वोकेबलरी आ सकती है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इसके अंदर जो है आइडियाज़ ऑफ द राइटर आ सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं जो मैं क्लास में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा। बिल्कुल अगर आप पेशावर से हैं तो आप मेरे पास आ सकते आ हैं, मैं सकते आपको हैं, इंशाल्लाह ज़रूर इसमें जी हाँ, गाइड करूँगा। बिल्कुल और ऐसा ही ये है। तमन्ना तमन्ना कह रही है, सर योर प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, हम हमेशा आपका प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, ज़रूर यू ज़रूर, गाइस आर थैंक यू वार्मली सो मच मिस तमन्ना एंड योर फ्रेंड एज वेल, क्योंकि आपने हम कहा तो जाहिर बात है आपके साथ वेलकम। कोई ना कोई कोई तो होगा। है। जी, तो आई थिंक ये आज माशाल्लाह स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इवन जी हाँ, रमज़ान बिल्कुल। भी है और इतना शौक थैंक से यू, इशफाक हुसैन मेरे स्टूडेंट है चित्राल से, वो हमें वॉच कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छे थैंक यू सो मिस्टर इशफाक, मच। थैंक यू सो मच मिस्टर इशफाक। अगर आपको आइल्स में कोई इशू है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अच्छा, आइल्स के अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस भी हैं मेरे पास, जहाँ पे मैं ESL इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली, अगर आप आते हैं मेरे पास तो न्यू इंटरचेंज एक्टिविटी बुक मेरे पास है, विच इज़ परचेज बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वो आप वहाँ से जो है ना उसका जो डिज़ाइन किया हुआ जो मॉड्यूल है वो मैं सिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो जी अगर हाँ, आपको कोई इशू है, किसी किस्म के कोई भी मसले हैं, तो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वहाँ पे इम्प्रूव हम होगी, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेना चाहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, तो उसके लिए भी आप मेरे पास आ आ सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल आ सकते जी हैं। कम्युनिकेशन में हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सर अमर के पास, क्योंकि मैंने पर्सनली इनके साथ क्लासेस ली हुई है, मैंने इनको देखा हुआ है, द वे ही कंडक्ट्स द क्लास, द वे ये जिस तरह से बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे कितना इंजॉय करते हैं। बिलीव मी कि क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि मेरा पर्सनली उठ के जाने को दिल नहीं करता। वो घंटे कम पड़ जाते हैं सर के साथ जितना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज ही बड़ी मज़े की है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। सिर्फ चीज़ क्या चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और सर आपके साथ हैं। इफ़ यू आर डिटर्मिंड, सर इज़ कमिटेड। माशाल्लाह सर की ये बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि क्वालिटी है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप अपना इंटरेस्ट शो करें तो सर आपकी हेल्प करने की ईच एंड एवरी पॉसिबल कोशिश करते हैं और आपको उस पॉइंट पर लेकर चले जाते हैं फाइनली, जहाँ पर आप अपने आप से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं। सर ऐसी बात है। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली ऐसे ही वी है। आर रियली वेरी थैंकफुल टू Sir Amar Awais, and I will again welcome you all. I'll request you all to visit FutureServe Overseas Education Services so that you'll never miss the chance to learn from the brilliant IELTS instructor we have here. और ये ऐसा नहीं है कि मैं इनकी सिर्फ बातों की हद तक तारीफ कर रही हूँ, yes he deserves it, because मैंने खुद पर्सनली इनके स्टूडेंट्स को अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हुए, अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते हुए देखा है। सो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अच्छा, फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर द ग्रेशियस वर्ड्स। थैंक यू। इशफाक हुसैन ऑफिस की लोकेशन मांग रहे हैं। ग्रेट। तो सर जी हमारा ऑफिस जो है, द लोकेशन इट्स रियली वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, शेख यासीन ट्रेड सेंटर इज़ द नेम ऑफ दिस प्लाजा जहाँ पे हम इस टाइम पे बैठे हुए हैं। 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द मेन अरबाब रोड स्टॉप। सर ऑफिस नंबर क्या है? 314। या 314। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप मेन अरबाब रोड स्टॉप पे आते हैं, यहाँ पे आप किसी से पूछते भी हैं तो वो आपको डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे गाइड कर देते हैं। दैट्स रियली नॉट एन इशू, यू कैन कम टू आवर ऑफिस इजीली। So it is Sheikh Yasin Trade Center at Bab Road Stop, third 3rd floor. फ्लोर,
and जी the office number is 314, थ्री right? वन फोर यस 314. अच्छा. चलिए मैडम कंडक्ट करें आई थिंक टाइम इज एनफ ठीक है जी जी जनाब फिर this is it for today the IELTS session. It was all about you, yourself, your IELTS, your preparation and everything. So guys, you can always visit FutureServe Overseas Education Services. We are available for you from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. Our address, as I've mentioned before, is very simple, is reachable. That is Sheikh Yassin Trade Center, third floor, main Arbab Road stop. You can also visit our website, that is www.fsoes.com. Plus, I will recommend you all to visit our Facebook page regularly so you'll never miss a chance to attend our live session. So be yourself. Ramadan Kareem to all of you once again. हमें अपनी खास और खास दुआओं में याद रखिएगा. And we'll be back tomorrow with another interesting sessions. Take good care of yourself. Future Serve is always here to help you. Thank you so much.